Introduced in 2009, India's Aadhaar stands as the world's most expansive biometric ID system. Originally conceived with an idealistic vision, Aadhaar aimed to bring in inclusion, especially financial integration, for many people belonging to the marginalized communities who lived without any official identification. However, what was designed as a beacon of inclusion has now turned into a tool of exclusion. From rations to essential government schemes, many of India's vulnerable find themselves on the sidelines, not because they lack entitlement, but because they have been unable to secure their Aadhaar cards. For 25 years, Sanja, who belongs to a below poverty line family, has not received her entitled rations. She hoped that the introduction of Aadhaar would provide a solution, but it only became another obstacle for her. आपको राशन कार्ड में क्या दिक्कत आ रही है? 2 बार एड्रेस चेंज करवाया, आधार कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ना राशन कार्ड बन रखा। 25 साल होगी, एक बार भी राशन नहीं मिला। 25 साल में आपको एक बार भी राशन नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि वो आधार में हाँ गलत है, उसकी वजह से कह रहे नहीं बने। आधार में आपका एड्रेस थोड़ा सा हाँ गलत है, हाँ गलत है। इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। आपने कभी उसको आधार वाले एड्रेस को ठीक करा? हाँ 2 बार करवाया, दोनों बार कोई सी बार भी नहीं आया सही हो गए। कुछ कारण बताया उन्होंने कि कुछ भी ना बताया, वे तब बनाकर छुट्टी करें, वे कुछ ना बताते बनाने वाले। राशन कार्ड मैंने कई बार कोशिश करी, नहीं काम हुआ। क्या कारण था उसका और आधार से क्या बता रहे थे वो लोग? अब बस यही कभी कुछ कमी लगा देते, कभी कुछ कमी लगा देते, पर मेरा काम नहीं हुआ राशन कार्ड। आधार से वो लिंक नहीं हो पा रहा, आप बता रहे थे। आधार में क्या गलती है आपको? आधार में कोई गलती नहीं है। आधार में ये गलती है कि उसमें बहुत दिन पहले बनवाया था आधार कार्ड, तो उसमें मैंने फ़ोन नंबर नहीं डरवाया। पहले नहीं डरवाते थे, तो उसमें फ़ोन नंबर नहीं है। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, पर अब ये है ना, पता नहीं कुछ कमी बता देते हैं। मैं रहती हूँ बीमार, मेरी तबीयत ठीक नहीं देती, तो इस वजह तो भूल भी जाती हूँ। In 2013, the Supreme Court declared that no individual should be disadvantaged due to the lack of an Aadhaar card. The court emphasized that the government cannot deny services to residents without Aadhaar, as its possession is voluntary, not obligatory. Yet, numerous individuals like Sridevi find themselves barred from government schemes because of issues with their Aadhaar cards. आपको बच्चों की स्कूल वगैरह से लेके क्या समस्या आ रही है? मैं मतलब आधार कार्ड में बस नाम ठीक है, पर कुमार करवानी है। अच्छा, जैसे निखिल कुमार, बस निखिल नाम में निखिल कुमार कुमार करवानी। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? यूँ जरूरी है कि उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल के लिए बच्चों के पैसे आते हैं उससे। आधार कार्ड में नाम आपने चेंज करवाने की कोशिश की? हाँ, डाक खाने में भी गई, अब माँ गई मैं, तो सर ने यूँ बोला कि ऐसे ही इसी नाम पे हो जाएगा, तुम जाकर देखना एक बार ही। आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा? बस ये नहीं बना राशन कार्ड के। मेरे आधार में वो थोड़ा क्या कहते हैं, एड्रेस ख़राब हो गया था, वो मैंने सही भी करवा ला और फार्म भी कई बेर भर ले, नहीं आया। आधार में आपका एड्रेस कैसे गलत है जो आप बता रहे थे अभी? ऐसे आधार बनवाए थे ना, तो पड़ोसी के वहाँ पे चला गया मेरा आधार कार्ड का एड्रेस, फिर मैंने वो सही करवा लिया। फार्म मेरा वो भर भी दिया, 4 बेर भरा, नहीं आया और कैंसिल हो गया बनाया। कितने समय पहले राशन कार्ड कैंसिल हुआ था? मेरा तो कितनी साल हो गई, 10 साल से ज़्यादा ही हो गई। 10 साल से ज़्यादा? हाँ। अच्छा, अभी उसकी वजह से आपको 10 साल से राशन नहीं मिल पा रहा? नहीं, मैं कभी नहीं लिया, जन्म पूरी ज़िंदगी यहीं करी जा रही है, नहीं लिया। 30 साल हो गई यहाँ पहाड़ी पर रहते हुए। अच्छा, अब आधार में एड्रेस सही हो भी गया? सही हो गया, फार्म भरा नहीं आया, कई बार भरा नहीं आया। एक बार बोली थी कि कैंसिल भाई फार्म आधार में साकेत में जमा होते हैं, मैंने माँ भी जमा करा, वो भी नहीं आया। Aadhaar is not only influencing access to government services but also impacting employment. Many individuals, including Raj Chauhan, find themselves without jobs as they lack a valid Aadhaar card to present to potential employers. Left with limited choices, Raj today continues to work as a daily wage laborer to make ends meet. आधार नहीं होने के कारण क्या क्या दिक्कत समस्या आ रही है? अब देखो सर, ड्यूटी नहीं मिल रही पहली बात तो, ठीक है, घर वाला कैसे चलाऊँ। अब पापा है मेरे, उनको ही देखना है, तो जहाँ पर भी ड्यूटी पे जाओ तो आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, तो वो है नहीं मेरे पास, तो कैसे जाऊँ बताओ खुद ही आप। मैं
रात भर नहीं सो पाता था कि ड्यूटी कैसे मिलेगी, क्या मजदूरी करके काम चलाता था मैं अपना। Since the inception of Aadhaar services, countless Indians, especially from marginalized communities, have been struggling to obtain their cards to ensure they aren't excluded from essential schemes. Apurva Gupta highlights a concerning trend. The government's aim to prevent wrongful inclusions might actually be causing a surge in rightful exclusions. One person in Jharkhand actually died because of hunger. But when, a public hearing happened and a fact finding happened, and when the report was submitted, the government officials actually said that, wait, on the portal, it said that this person had already withdrawn the ration. But they actually had not. Aadhaar was brought in to make sure that all this processes becomes easier. But I think what we are currently doing is we are overly focusing on wrongful inclusions. Like किसी को गलत benefit ना मिल जाए, rather than because of all this infrastructure, it's leading to rightful exclusion. Like people who are actually are getting excluded, but we are just so worried and so focused on किसी का गलत तरीके से inclusion ना हो जाए. Even if you want to build in this tech in terms of Aadhaar, it should never be made mandatory. Like, because when you're making something mandatory without developing the entire infrastructure, without ensuring that everybody has the right identification, it's just going to lead to exclusion. Despite our efforts to seek clarity, our attempts to engage the UIDIA authorities with a comprehensive set of questions about Aadhaar were met with silence. As the debate around Aadhaar grows, it's crucial for those in authority to make sure the voices of the most vulnerable don't get drowned in bureaucratic noise. The pressing question remains: if the vulnerable aren't being heard, who is Aadhaar truly serving?